He has experience of handling various international taxation, including transfer pricing matter of big corporate. And apart this, when he was the chairman last year, he did so many exemplary work, which was very widely appreciated across the country. So with this, sir, I welcome you and congratulate for the wonderful work during your chairmanship, and welcome Dr. Ravi Gupta ji also. And over to you, sir. Thank you, Rajesh ji. And let me put on record my appreciation to the Pusa Road Study Circle for organizing this wonderful webinar today and inviting us to participate in the seminar. My co-panelist and my worthy student, I'm proud of him, CA Avinash Gupta ji, Atul Puri ji, Shiv Khatri ji, Ashwini Jindal ji, Ashish Singhal ji, and other senior members from the profession. It is seminars like this, the webinars like this, through which the learning process is taking place. And I must congratulate Rajesh ji for his active participation. And even during the COVID times, he has been so actively participating and organizing these webinars for the benefit of the entire profession. It needs a lot of appreciation. Thank you, Rajesh ji. Thank you, sir. Thank you. That series, you have organized this seminar on drafting of appeals before Commissioner Appeals, a very important and a very practical topic that you have selected for today. And I think the participants should gain immensely from this active participation and interactive discussion. We have a small presentation for you, which Avinash ji will take you through. In the beginning, as an introduction, I would like to highlight some of the facts that I have to take into consideration while drafting and while filing the appeal before the commissioner. See, this is the first appellate remedy available to the assessee. Especially these days, when we are seeing a lot of orders being passed under Section 148 and other normal assessments also being passed by the faceless assessment scheme regime under that, the orders that we are receiving are, I could say, on two extremes. Some orders we are receiving where even highly debatable issues have been accepted by the department. At the same time, we are coming across a lot of cases where even the submissions filed by the assessee during the assessment proceedings have not been properly considered. And very high-pitched assessments have been made. अविनाश गुप्ता वो बंदा है। शिव खत्री जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, या राजेश जी अगर आप कर सकते हो तो प्लीज कर दीजिए। मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ सर। In fact, today morning only, a very close friend of mine, a chartered accountant, very senior person in the profession, he came to me with an assessment order. और कितनी assessment है एक chartered accountant की? 234 करोड़ रुपए। Oh my God! 234 crore rupees की उसकी assessment करी गई है, only on the basis of a half-page complaint filed by someone. And the complaint was that some other company, not him, some other company has received some loans of 2.34 crores. और लिखते लिखते 2.34 का टोटल करते करते वो कहीं लाख को करोड़ कर गया। तो 2.34 लाख को 2.34 करोड़ मान लिया। डिपार्टमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कुछ उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं करी, नोटिस भेजा, असेसी ने पूरा रिप्लाई दिया, असेसी ने अपना बैंक अकाउंट दिया, एफिडेविट दिया दैट आई डू नॉट हैव एनी अदर बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट में कोई लोन आया नहीं है, कुछ नहीं सुना, 234 करोड़ रुपए की असेसमेंट करके भी। तो ऐसे ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो इसलिए नाउ इट हैज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द एसएससी एज वेल एज द प्रोफेशनल्स। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो अपेलेट हमारे पास जो एक प्रोसीडिंग्स है उसको बहुत ध्यान से
और बहुत केयरफुली उसको हैंडल करें, so that we can get appropriate relief at appropriate time. Unfortunately, in most of the cases, the appellate proceedings are also now being conducted in a faceless manner, where you do not get the opportunity to explain face to face the facts and the circumstances of the case. So, इसलिए your drafting skills become all the more important. And therefore, while filing the appeal, while preparing my arguments, while submitting my arguments, I have to be very careful to use my expertise, to use my knowledge of the law, and then make my presentation. Avinash ji will take you through the presentation. सारा procedural aspect को समझाएंगे आपको, सारा बताएंगे भी कैसे कैसे करना है. We have also given you some practical tips. हमने grounds of appeal भी draft करके दिए हैं, applications भी draft करके दिए हैं, which you can use as a model for your appellate proceedings. एक सबसे पहले important suggestion जो हम देना चाहते हैं, that whenever you get an assessment order, first of all, analyze that assessment order, go through that assessment order very carefully, and try to prepare a reconciliation statement. What was my returned income? What are the additions made? And how much is the assessed income? इसके differences में जो भी point बीच में आते हैं, that must become very clear. क्योंकि कई बार क्या होता है कि assessment order में कई point को assessing officer ने discuss ही नहीं किया. आपने कोई डिडक्शन क्लेम करी थी, उसने डिस्कस भी नहीं किया और कंप्यूटेशन बनाते हुए नीचे उसने वो डिडक्शन देना भी भूल गया. तो अगर आप रिकंसिलिएशन नहीं बनाएंगे, ये पॉइंट आपके सामने नहीं आएगा, यू मे नॉट इंक्लूड दैट इन योर ग्राउंड्स ऑफ अपील. और जब आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी दिखेंगे वेयर इंस्टेड ऑफ एन अपील यू माइट थिंक ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन. कुछ मिस्टेक्स भी रह सकती हैं. तो इसलिए अगर मैं रिकंसिलिएशन बनाता हूं एक परफॉर्मा उसका दिया हुआ प्रेजेंटेशन में, सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल एंड व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसलिए पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा, दैट यू मस्ट प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन ऑफ द रिटर्न्ड इनकम एंड द असेस्ड. सेकेंडली, when you are filing your appeal, the most important aspect of the appeal is the grounds of appeal. Grounds of appeal का मतलब होता है कि what are the objections that I have to the assessment order. अब grounds में जितनी भी एडिशन अगर हुई है तो उसका मेरे को ऑब्जेक्शन लेना है. उसकी एक सेट लैंग्वेज बना लेते हैं, दैट द लर्नेड असेसिंग ऑफिसर, अब वो लर्नेड है नहीं है पर लिखना पड़ता ही है, दैट द लर्नेड असेसिंग ऑफिसर हैज erred on facts and in law in making an addition of rupees 50 lakhs by invoking the provisions of section 68 of the Income Tax. तो ये एक ग्राउंड मैंने 68 के एडिशन का बना दिया. अगर मेरी असेसमेंट 148 के अंदर खुली है तो आई मस्ट टेक एप्रोप्रिएट ग्राउंड्स फॉर ऑब्जेक्शन टू द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स आल्सो. अब 148 के अगेंस्ट कई ग्राउंड्स पे मैं ले सकता हूं, दैट द नोटिस वाज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ invalid facts, the reassessment proceedings are on the basis of borrowed satisfaction, the reassessment proceedings have been initiated without application of mind. तो ऐसे बहुत सारे मेरे फैक्ट्स बन सकते हैं और बहुत सारे ग्राउंड्स में ले सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. तो अगर 147 में है तो मुझे 147 की ऑब्जेक्शंस लेनी है, जितनी भी एडिशंस हैं वो सबके एडिशंस लेनी है, ग्राउंड्स बनाने हैं, प्लस 3-4 ग्राउंड्स मुझे हमेशा एक जनरल नेचर के भी डाल देने चाहिए, दैट द असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन फ्रेम्ड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, that the assessment order has been framed without considering and properly appreciating the submissions made during the assessment proceedings. इसमें क्या होता है कि अगर कभी मेरा कोई ग्राउंड रह भी जाता है तो I have taken these general grounds, so during appellate proceedings I can say that my ground is covered under this point. तो इसलिए while drafting the grounds, be very careful
include each and every ground. When I say the grounds of appeal have to be crisp and short. They do not have to be argumentative. मुझे अपने आर्गुमेंट्स नहीं देनी है ग्राउंड में, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन बताना है कि मुझे इस चीज पे ऑब्जेक्शन है. जो सबमिशंस हैं, जब हम रिटर्न सबमिशंस फाइल करेंगे उस वक्त आई कैन गिव ऑल माय आर्गुमेंट्स. पर ग्राउंड्स ऑफ अपील में क्रिस्प 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का ग्राउंड ऑफ अपील बनाया जाता है. तो आई मस्ट बी वेरी केयरफुल इन ड्राफ्टिंग दी ग्राउंड्स ऑफ अपील. अगर कोई ग्राउंड मेरा रह गया, जब मैंने अपील फाइल करी उस वक्त एक ग्राउंड रह गया, और कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में अपील फाइल करने के बाद कुछ जुडिशियल डिसीजंस आती हैं जिससे कि मुझे पता चलता है कि ये भी ग्राउंड हो सकता था. तो नाउ इफ आई वांट टू टेक दैट ग्राउंड, आई कैन ऑलवेज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स. उसके लिए रूल है, रूल 46A इनकम टैक्स रूल्स में दिया हुआ है. देयर आर 4 circumstances which have been given under which I can file an additional ground. तो एडिशनल ग्राउंड भी दे सकता हूं. जो एविडेंस मैंने असेसमेंट में दिया था, मोस्टली आई हैव टू रिलाई ऑन दैट एविडेंस ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आल्सो. इसलिए असेसमेंट के दौरान भी आई मस्ट बी वेरी केयरफुल कि मेरे पास जितना भी एविडेंस है इन माय सपोर्ट, आई मस्ट ट्राई टू फाइल दैट बिफोर द असेसमेंट ऑफिसर. वो माने नहीं माने बात अलग है, बट आई मस्ट फाइल ऑल दैट एविडेंस, तभी मैं जाके उसका बेनिफिट ले सकता हूं. अगर असेसिंग ऑफिसर कोई स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करता है किसी की, आजकल ये अकोमोडेशन एंट्रीज, बोगस परचेजेस, इनमें सब में आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर वो 100, 200, 500 केसेस खोल देते हैं. अगर कोई स्टेटमेंट पर रिलाई करता है, आई मस्ट आस्क फॉर ए कॉपी ऑफ दैट स्टेटमेंट एंड I must also ask for an opportunity to cross-examine that person. सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं जहां उन्होंने कहता है कि if you rely upon any evidence without allowing an opportunity to the assessee, if you rely upon any statement without opportunity of cross-examination, that evidence is invalid. तो अगर मैंने ये प्लीडिंग्स अपनी असेसमेंट में ली हुई हैं, then I can raise these issues in the appellate proceedings also. और अगर मैं कोई ग्राउंड लेना भूल गया हूं, I should file an application for taking an additional ground. अगर कोई नया एविडेंस देना है, I can file an application for submission of additional evidence also. कई बार इशू ऐसा आता है कि I want to raise a fresh claim before the appellate authority. मैंने एक क्लेम अपने रिटर्न में फाइल ही नहीं करा, क्लेम ही नहीं करा. नेचुरली असेसिंग ऑफिसर ने इसको अलाउ नहीं करा होगा. कैन आई मेक दैट क्लेम फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एन अपीलेट अथॉरिटी? उसके ऊपर भी बहुत सारे डिसीजंस हैं दैट ऑल्दो फ्रेश क्लेम कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, बट यस, अपीलेट अथॉरिटीज हैव द पावर टू डू दैट. तो अगर मेरा कोई क्लेम भी छूट गया, so I should raise that before the Commissioner Appeals also. अब जब हम CIT अपील के पास जाते हैं तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बार हमने अपील फाइल कर दी, I have no right to withdraw that appeal. I can withdraw an appeal only with the consent of the CIT appeal. It is not a matter of right कि I want to withdraw my appeal. Because the Commissioner Appeals has the power not only to grant you relief, he also has the power to enhance your income. आप मांगने तो गए थे रिलीफ और CIT अपील को लगा कि नहीं, असेसमेंट ही कम इनकम पर हुई है, he has the power even to increase your income. तो उसके पास जब हम जाते हैं तो entire assessment is open for him. He is just like a super assessing officer. तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि once I go in appeal, I will not be allowed to withdraw it, and I also have a risk कि my income may be enhanced. अगर कुछ असेसमेंट ऑर्डर में उसने असेसमेंट करते वक्त ठीक से नहीं एनालाइज करा, फैक्ट्स ठीक से नहीं लिए, एडिशन कम करी है, तो असेसिंग ऑफ द CIT अपील में इवन एनहांस दैट इनकम.
कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स हैं, 2-3 थ्योरीज हैं विच हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं इन दी असेसमेंट, इन दी अपीलेट प्रोसीजर। एक होती है थ्योरी ऑफ टेलीस्कोपिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अविनाश जी इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझा देंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। बट टेलीस्कोपिंग में क्या होता है कि सपोजिंग सम एडिशंस हैव बीन मेड टू माय इनकम इन द प्रीसीडिंग ईयर्स व्हिच आई हैव नॉट चैलेंज्ड। कुछ एडिशंस हो गई थी जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर टैक्स भी पे कर दिया। अब सब्सिक्वेंट ईयर में मेरी कोई अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट मिल गई। अब असेसिंग ऑफिसर कहता है आई विल ट्रीट दिस एज unexplained investment, 69 में इस पर टैक्स लगता है। You can take a plea that this unexplained investment is out of the income which has been taxed in the last years. कि वो इनकम मेरी जिस पर टैक्स लगाया वो इनकम कहां गई? That income was available with me. तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट उसी से करी है। इसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग थ्योरी। उसी साल में भी हम लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्च के केसेस में मेरी कुछ इनकम जो है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम उन्होंने पकड़ ली, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को टैक्स कर दिया। एक मैंने कोई मकान में भी इन्वेस्टमेंट करी थी, वो कहते हैं मकान की इन्वेस्टमेंट भी अनडिस्क्लोज्ड है तो इसको भी इसमें टैक्स करेंगे। देयर अगेन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ टेलीस्कोपिंग कि जो आपने इनकम टैक्स करी है मेरी, ये मकान भी उसी से बना है, तो इसलिए देयर शुड नॉट बी डबल एडिशन। तो जिस इनकम पर मैं टैक्स दे रहा हूं उसका कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट भी क्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये टेलीस्कोपिंग थ्योरी, इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज भी हैं, इसको हमें जहां पर भी हो सके यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मेरी इनकम काफी सब्सटैंशियली रिड्यूस हो सकती है। एक कंसेप्ट होता है पीक थ्योरी का। कई बार एक एसएससी का अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट मिल गया, उसमें डेबिट्स भी हैं, क्रेडिट्स भी हैं, और अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो बहुत बारी असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, सारे क्रेडिट्स को भी ऐड कर देता है, सारे डेबिट्स को भी ऐड कर देता है। तो कहता है ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, तो दोनों को ऐड कर देता है। इनफैक्ट उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं पीक थ्योरी का। पीक थ्योरी कहती है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि ये मेरा अकाउंट है और इसी में मेरे पास पैसे आ भी रहे और जा भी रहे हैं, देन दिस रिलेट्स टू माय बिजनेस। तो उसमें हम कहते हैं कि जितना मेरा मैक्सिमम बैलेंस आया है साल को, उसको आप टैक्स लगा लीजिए। इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग ऑल द एंटायर डेबिट्स, ऑल द एंटायर क्रेडिट्स, यू शुड टैक्स ओनली द पीक बैलेंस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी। इसका भी हम बेनिफिट अपने केसेस में ले सकते हैं। फिर आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे वेयर डबल एडिशंस आर मेड। अब जैसे एक केस में हम कर रहे थे, उसमें एक असेसी की इंफॉर्मेशन आई कहीं से इनके पास कि इसने अकोमोडेशन एंट्री ली हुई है थ्रू ए कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज की कोई ब्रोकर से इसने एंट्री ली हुई है, और वो एंट्री जो है दैट इज नॉट अ जेन्युइन प्रॉफिट की एंट्री। अब असेसी ने 60 लाख रुपए की इनकम दिखाई फ्रॉम कमोडिटी, उसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करा हुआ। बाद में ये पता चला कि वो पार्टी जिससे मेरे पास 60 लाख का चेक आया था, वो पार्टी अकोमोडेशन एंट्री देती है, तो उन्होंने मेरी अकोमोडेशन एंट्री को ऐड कर दिया। बट द फैक्ट इज दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड दैट इनकम इन माय रिटर्न। आई हैव डिस्क्लोज्ड दैट एज इनकम फ्रॉम कमोडिटी ट्रांजैक्शंस। तो जब मैं ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूं तो उसको फिर दोबारा से अकोमोडेशन एंट्री के बीच में करना, दैट इज नॉट परमिसिबल। तो डबल एडिशंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो आई शुड टेक अगेन दैट प्ली कि भाई ये इनकम तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, मे बी अंडर अनदर प्रोविजन। मैंने उसको बिजनेस इनकम में कर दिया, 28 में कर दिया, आप उसको 69 में मानते हैं, वो बात अलग है, बट दिस इज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इनकम। तो इसको हम कहते हैं डबल एडिशन। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है इसको हमने ध्यान से एनालाइज करना है, एंड व्हाइल ड्राफ्टिंग माय सबमिशंस जहां पर भी हो सकता है मैं इन चीजों का बेनिफिट लेने की कोशिश करूंगा। आई विल नाउ रिक्वेस्ट अविनाश जी टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, और ये सारी चीजों में आपको पूरा प्रोसीजर्स और सारी चीजों को पूरा डिटेल में समझाएंगे। राजेश जी, आई माइट हैव टू लीव इन बिटवीन, तो ये शुरू करेंगे पर ये सारा अपना कंटिन्यू करेंगे, एंड देन यू मे इवन शेयर द प्रेजेंटेशन विद द पार्टिसिपेंट्स।
तो उनके लिए काम आ सकती है। I already shared the. ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। सर लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा सर, थोड़ी देर लास्ट में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ मैं करूँगा सर, हाँ कंक्लूड के लिए सर। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वापस ज्वाइन करता हूँ आके। हाँ सर सर सर। Thank you, sir. Sir is my teacher in college, and since college days, I am learning various things from him, and all these telescopic theory, peak theory, and many others which he have not disclosed now. So we'll take up in the presentation during the day. So I'll share the presentation first. Today, I think Rajesh ji, I must compliment you that you have taken this topic at an appropriate time. We are all receiving a huge amount of orders under section 148. Now the 143.3 order have been postponed to 30th September for the assessment year 2021. But many people have also got their 143.3 orders also. And now recently the CIT appeals have also started sending notices. So all those appeals which have been filed earlier by us, now we have to prepare it virtually after 2 years, we have to file it. And we have to file the detailed reply. So first I will take up a run through of about the provisions that we have, and then we'll discuss the practical aspects of it. Wherever we take one part, that what are the things what one should keep in mind while filing the appeal. And we will be taking care of those things also, where if the appeal, let's say, have already been filed due to have already been filed by somebody or us only, but now they require some rectification or some kind of a new ground to be filed in those cases. How can take it? So, sir, first of all, appeal filing is there under section 246A. 147, 154, 201, 271, and 153C, 153A, etc. Then there is another provision which have started, that is Finance Act 2022, which have started that we can also file a refund application, and assessment has to be done under section 139A. And against that also nowadays we are allowed to file an appeal before CIT appeal. I'll take up this particular part also because this is a newly incorporated section. Effective from 1st of April. अविनाश भाई आपकी आवाज ब्रेक कर रही है बीच में। अविनाश भाई आवाज ब्रेक कर रही है। Let me change my internet connection. Sir, I hope now it is clear. Now it is clear. Absolutely, sir. I just changed my internet connection to another. Normal से sir Jio पे चले. चले sir. So what I have said is there is an earlier 246A provision under which we have to file a CIT appeal, and there is a newly incorporated provision which has started for the orders under section 195 that I will take it effective from 1st April 2022 onwards. But let us start with our earlier provisions of 246A. So in 246A, we can file an appeal against an intimation received under 143.1 or 143.1B, 2020A1 and 206CB1. So these are all intimations which have been received under various provisions. So intimations with TDS, intimation of TCS, intimation of return of income. Now the first question which comes here, which is a practical problem, and Rajesh Bhai is always asking me that he receives and he filed a return of income of any SSC. Then he received a notice under section 143.1A, and
either he have replied for the same or he have not replied the same. But after this, he received a simple 143.1. Now the question is whether he should go for a rectification under section 154 against that intimation received under 143.1, or whether he should go for an appeal. So this is a dilemma which have come to everyone. So my reply to it, that if it was only a calculation error. So for example, I received one order, or not order, I received one intimation 5 days back, whereby a company's 143.1 have received. I have opted for a new scheme of 115 BBA, whereby there is 22% tax. But while computing the tax liability under section 143.1, the assessing officer or CPC have calculated the MAT in that case. So this is a new thing which have come up, whereby the assessee company is in the new provision and MAT provisions are not applicable in those cases. However, the CPC, while processing the return, they have applied the MAT and calculated the tax liability under the MAT. Now, in these kinds of a situation, maybe a simple 154 is good enough, whereby there is nothing factual things involved. It is simply legally it is not allowed, and you can simply ask the CPC to rectify it. But if there is something like an issue relating to, let's say, PFESI, so for the earlier financial years, if the 143.1 intimation received where involves an issue that late deposit of PFESI have been disallowed by 143.1 itself, which is a controversial issue. If you file a 154 against that, no result will come. Nowadays, because the law have already been amended and that have already been clarified that it was not covered under 43P and it was covered under 36 only. So for the current year, for the assessment year 21-22, there is of no use. But yes, for the earlier years, if there is something, it is in those cases, it is always better to file and CIT appeal against that order of 143.1 instead of going for rectification, because nothing will happen in rectification. In few cases, if the amount of demand is more, then yes, we can file both. But when you file both, when you have already filed 154 as well as CIT appeal, then you have to disclose this fact to the CIT appeal that you have already filed a 154 as well. You should not hide this fact. And you can ask CIT appeal to either give a direction, give a favorable decision to you, or direct the AO that this 154 has to be complied with, etc., or order has to be passed. So this is what is required under 143.1. Now next order which is appealable before CIT appeal is 143.3, which is your normal assessment order, normal scrutiny assessment, where you have submitted certain details and that have not been considered, or maybe considered but not accepted, and then there was order have been passed. Here, while drafting an appeal for these orders of 143.3, what is to be kept in mind? First, it has to be a reasoned order, meaning thereby that whatever is the assessment, whatever is the addition made has to be given in clear terms, and all the reasons why he have made addition has to be there. So it has to be a reasoned order. But this is one which is very important. In each appeal, whatever we file to CIT, there are two kinds of ground which everybody has to take. One is the legal grounds, कि opportunity of being heard नहीं मिली. अभी सर ने भी बताया कि एक general ground बना दो, opportunity of being heard नहीं मिली. Reasoned order नहीं है. मेरे reply को जो मैंने दिया वो consider नहीं किया गया. So these are all legal grounds. Then there is some factual ground also. Factual ground क्या? कि सर मेरा अकाउंट में ही चेक से लोन आया था, मैंने सारे जो है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस थी, फिर भी उसने 68 में एडिशन कर. He have made 14A एडिशन. He have made इंस्टेड की भी मैंने सरप्लस फंड लगाए थे लेकिन फिर भी 14A में एडिशन हो गई. या उसने जो है कुछ और चीजें इस तरह की दी जो फैक्ट्स रिलेटेड हैं और वो मैंने उसके बिल प्रोवाइड करे थे, उसने बिल नहीं कंसीडर करे इसलिए वो हो गया. सो ये दो तरह के ग्राउंड आप उसमें ले सकते हैं. पहले हमेशा लीगल ग्राउंड लेने, दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं थी,
रीजन ऑर्डर नहीं है, और इसके अलावा जो है किस सेक्शन में एडिशन है वो मेंशन नहीं है. All these kinds of a ground which are a pure legal ground has to be taken in 143(3) first. Then comes to the factual ground कि किन किन ground पे एडिशन है और उन grounds पे आपने क्या लिखा है. One thing which is very important is always start with your grounds of appeal by saying that whatever is the order which have been received under 143(3) is bad in law and bad in facts. Hence, it is a void order. So ये एक पहला ground लिख के उसके बाद आप जो भी facts of the case के ground है वो आप उसमें लिख सकते हैं. Then there is another issue which have to be seen very carefully is that whether the assessee or the appellant want to submit any other information which have not been submitted before the AO. So this we call as an additional evidence. So ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने order पढ़ लिया, you have to read each and every line of the assessment order. There might be possible that on page number 3, the second last line, he must be alleging something against the assessee, which is the wrong allegation. So he may say that the assessee failed to provide the ITR of the parties from where the share application money have been received. However, the assessee have provided. So make it that particular line as a ground that a learned AO is erred in fact by stating that the assessee have not provided the ITR copies. However, the same has been provided. So this ground itself you will be in a more position to win, because the assessing CIT appeal will say, okay, meaning thereby he have passed an order keeping in view that ITR copies etc. have not been provided. That's why there is no creditworthiness. However, when you say no sir, these have already been provided, but उसमें देखी नहीं और उसकी आपको proof लगाना है. आजकल तो sir everything is uploaded on the system, so you can download anything and say that हमने दिया था. So that will help you a lot. So if you found few things in the order whereby the assessing officer is alleging you that things have not been provided, but if the same has been provided, always make a ground and say that these things are wrong. These have been wrongly communicated in the assessment order. So that is also very important. But if you feel that there are certain details which are important to justify yourself, then you have to see whether the same can be classified as additional evidence and to be admitted or not. According to me, the additional evidence has to be into two parts. ये नहीं है कि किसी चीज को भी आप additional evidence बना. So additional evidence can be of two types. One is those additional evidences which have never been asked during the assessment proceeding. उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी यहाँ पे जो है 14A की एडिशन हुई और 14A की एडिशन के अंदर उन्होंने कहा कि आपका ये जो पैसा है ये सरप्लस मनी, हमने लिखा अपनी सबमिशन में कि बिकॉज इट इज आउट ऑफ द सरप्लस मनी और इट इज आउट ऑफ सर्टेन अदर फंड्स, एंड दैट असेसिंग ऑफिसर हैव नेवर आस्क्ड अस टू प्रोवाइड अ प्रूफ दैट इट इज आउट ऑफ द फंड. बट अब हम अपने अपील में उसकी बैंक स्टेटमेंट लगा के देना चाहते हैं, या हमने 68 की कोई एडिशन है या कोई और सेक्शन की एडिशन है, उस सेक्शन में हम कोई एडिशनल एविडेंस अपने आप से लगा के देना चाहते हैं. असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग कभी भी मुझसे ये एविडेंसेस नहीं डिमांड किए थे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटेगोरिकली स्टेट टू द CIT अपील that sir we are submitting these additional evidences which have never been called by the assessing officer during the assessment proceeding. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सर मेरे एक असेसी की एडिशन हुई. he is a non-resident. He said that he have purchased certain part of land in India, and the assessing officer says that this land, the consideration have been paid from NRE account, and in that NRE account, from that NRE account, because the assessee have failed to explain that why the sale have been made from the NRE account, however the money is also lying in the NRO account, something like that. And he have never challenged in this order that the money lying in the NRE account is an illegal money, or from where this money have come. So in the CIT appeal, we have taken a stand, sir, this money received in this NRE account is from my assessee's foreign bank account, which is in his name only.
and he is a non-resident for last 10 years, and this money he have accumulated abroad, and this money have been sent to India every year. Because of that, there is an accumulation of money. So we have submitted the bank statement of a foreign account of the assessee, which have never been called during the assessment proceeding. And this additional evidence is being allowed immediately. So ऐसी कोई चीज जो असेसमेंट में नहीं मांगी गई बट आप दोबारा से आप उसको देना चाहते हो, तो in that case it is easy to get this additional evidences admitted at the CIT. Now the second kind of evidences are those additional evidences which have been called by the assessing officer during the assessment proceeding, which the assessee has failed to provide. अब उसने बोला जी आपके यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी, जिससे आई थी उसकी आईटीआर लेके आओ, उसकी बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, उसकी बैलेंस शीट लेके आओ, और आपने दी नहीं. You have not provided, मतलब एसएससी हैव नॉट प्रोवाइडेड द सेम. तो राजेश जी अगर उस केस में आप देने जाओगे तो ऐसे ही एडमिट नहीं करेगा वो. He will ask you कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या कारण थे कि आप असेसमेंट प्रोसीडिंग में ये एविडेंसेस नहीं दे पाए. इफ यू हैव सफिशिएंट कॉज व्हिच हैव प्रिवेंटेड यू टू सबमिट दोस एविडेंसेस, then only he will admit it. Otherwise he will reject your evidences. He will say that I will not admit those additional evidences. So यहाँ पे ये important है, वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि जी वो पार्टी जो थी वो मिल नहीं रही थी, या पार्टी नहीं दे रही थी, या मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रीजन है, that we have to tell them as per the rule 46A कि उन केसेस में हमने ये additional evidences क्यों नहीं दिए. So this is very very important. और सर बहुत बारी क्या होता है, देयर आर फ्यू सीआईटी अपील्स, और खास करके अभी हमने फेसलेस के रिजीम में देख रहे हैं, वेयर दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एडिशनल एविडेंसेस. तो वर्चुअल हियरिंग जो आपको मिल रही है उसमें आप ये प्लीज कैटेगोरिकली बताएं कि ये एडिशनल एविडेंसेस कौन सी कैटेगरी के हैं. अगर ऐसे हैं जो कभी मांगे नहीं गए थे तो इमीडिएटली एडमिट कर लेंगे कि ठीक है जी आप अपने आप से कुछ एडिशनल बता रहे हैं जो ना एओ को मांगे, उसके बाद वो रिमांड रिपोर्ट मंगाए, क्या मंगाए, दैट इज देयर हेडिंग. But we have to say them. But those who are been asked but not provided, वहां पे assessee appellate जो है उसकी responsibility है to prove कि उसके पास sufficient cause था not to provide those evidences during the assessment proceeding. So I hope this is clear, sir. Additional evidence के. Yes sir, yes sir, yes sir. चले सर आगे चलते हैं. सर 144 के ऑर्डर्स भी जो है अपीलेबल होते हैं. जनरली 144 के जो ऑर्डर्स होते हैं, these 144 ऑर्डर्स आर आइदर 144 रेड विद 143 होते हैं, या 144 रेड विद 147 होते हैं. So best judgment assessments are those assessments which the cases are unattended, and in 144 orders 100% chances are there where you have to go for an additional evidences, because इनमें assessments जो है वो ex parte assessment कर दी जाती है. ना कोई अपीयर हुआ असेसिंग ऑफिसर के पास, और अगर अपीयर हुआ तो सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट उसको दिए, बाकी कुछ भी एविडेंसेस नहीं दिए, इसलिए उसने एक्स पार्टी ऑर्डर कर. तो यहाँ पे सर एडिशनल एविडेंसेस का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है. एंड 144 के ऑर्डर्स में जनरली सीआईटी अपील्स जो है वो आपके एडिशनल एविडेंसेस जो भी आप देना चाहें, सो दे विल जनरली अलाउ दीज थिंग्स कि आपने एडिशनल. बट आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ऑर्डर 144 में क्यों हुआ, आपको नोटिस रिसीव नहीं हुए, और जो आपको नोटिस मिला वो आपका एसएससी बीमार था, वो आपको दे नहीं पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर while going for CIT appeal in if there is an order under section 144. Now comes to the main part of the order, main things of the order जो आज की डेट में हमारे पास बल्क में आए हुए हैं, which is 147 order. So 147 orders are those orders which are reassessment proceeding, which I think faceless have just completed on 31st March. अब सर इसमें बहुत सारे issues हैं, and I think much of the technical grounds are to be taken in all those reassessment. सर सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो आज की डेट में आए हैं. I received one order today morning. सर आज सवेरे मुझे एक ऑर्डर मिला मेरे एसएससी को
और उसके ऊपर कल शाम के डिजिटली साइन है। टिन नंबर जो है वो 31 मार्च का है। सो द ऑर्डर हैव बीन signed yesterday, which is 5th of April, but the DIN number belongs to 31st March. तो श्रीवास्तव जी भी आ गए हमारे साथ। Invalid. श्रीवास्तव जी, what is the status of this order? This order is, the DIN number is there on 31st March. However, it was digitally signed. वो जो digital signature लगे हुए उसमें लिखा हुआ आ रहा है टाइप, which is of 5th of April. I believe that Srivastav ji will agree with me that this is an order which is deemed to be passed on 5th of April, not on 31st of March. Digital signature is the evidence of having signed the order on a particular date. Correct. That is the evidence. Now, So you may obtain. So, sir, in those cases, your first ground itself is that it is barred with the Barred time by of limitation. Barred by limitation. It is barred by limitation. The order has to be passed till 31st of March 2022. But because the order have received and signed on 5th of April, received on 6th of April, or maybe 5th of April itself might, but it is barred by limitation. So your first ground is always this only. अब now the question is, राजेश जी, आपको ये order पता है और ये order जो है वो 5 तारीख को signed है, सब कुछ सही है. Whether an assessee or appellate should take other grounds also in this case, या एक ground ले लिया काम खत्म. नहीं, सारे ग्राउंड लो सर अभी तो। All grounds. अभी आपको ये presume नहीं करके चलना कि if somebody have taken a legal ground that he will succeed in legal ground and there is no need to go for other grounds. So while filing the appeal, आप सब कुछ मान के चलो कि आपके सारे ग्राउंड रिजेक्ट होंगे तो भी लास्ट ग्राउंड जो भी आपको लेना है वो भी आपको लेना है. Maybe you write it without prejudice to that. Simply write it पहला, और हमेशा ग्राउंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है. पहले ग्राउंड नंबर 1 डिसाइड होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा. सो अगर ये जैसे ये वाला ऑर्डर मैंने आपको बताया तो क्या लिमिटेशन से बाहर है, ये मैंने पहला ग्राउंड ले लिया. दूसरा आई मे गो फॉर अ मेरिट्स का जो भी मेरा ग्राउंड है वो ले लूंगा, तीसरा ले लूंगा, चौथा ले लूंगा. सो ऑलवेज टेक ऑल द ग्राउंड्स. नेवर एवर थिंक दैट टेकिंग ओनली वन ग्राउंड इज मोर देन सफिशिएंट. आपको जितने हो सकते हैं वो लेने हैं. नेक्स्ट सर, 147 के केसेस में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें देखना होता है कि ओरिजिनल नोटिस ऑफ 148 किस दिन इशू हुआ. whether the same has been issued on 31st March 2021 or prior to that or after that. So original reassessment notice, whether that is barred by limitation or not. So this is the second thing what in 148 cases 147 matter that has to be seen. और अब अगले सालों से जब हम जाएंगे तो 148A का कंप्लायंस भी अब हमें चेक करना है. So we have to take that legal position कि ये 148A के नोटिस आया नहीं आया, उसमें आपका ऑर्डर पास हुआ प्रॉपरली या नहीं हुआ. बट अभी हम पुराने केसेस में चलते हैं. तो पहला हमने जो देखा ऑर्डर का देखा, दूसरा हम ओरिजिनल नोटिस से शुरू हो कि क्या हुआ. देन फॉर विद इन दैट नोटिस वी हैव टू सी कि हमने उसके बाद रिटर्न फाइल करी थी या नहीं करी थी. रिटर्न फाइल करने के बाद जो जीके एंड ड्रिवन सॉफ्ट का जो सेट प्रोसीजर है कि whether the assessee have filed an objection on the reasons or not, or have demanded the reasons or not. If yes, whether the reasons have been provided or not. If yes, then whether objection have been filed by the assessee or not. If yes, whether the assessing officer have disposed of the objection or not. A big surprise to me, sir. I received 10 orders under section 147 from the faceless, in which I am in appeal, where the objections have not been disposed of by the AO, either the jurisdictional officer or the faceless. मजे आ गए काम बन गया. सर मैं तो मतलब I am just telling कि these are very very small things कि ऑब्जेक्शन हमने रेज किया हमारे एसएससी ने
So all these are all cases which is not represented by me during assessment. But yes, objection have been raised, but the assessing officer have not filed given any dispose of those objections. So ये वाला जो प्रोसीजर है जीके ड्रिवन शॉप का, ये भी आपको देखना है कि ये हुआ या नहीं. If it is being followed, then okay. If it is not being followed, then these become the ground of appeal for 147. Next, after that, you have to see whether 143(2) have been issued or not. अब 143(2) का भी बड़ी interesting कहानी है. I have seen many appeals where it was written that 143(2) notice have not been issued. And when I asked the SSC that where you have filed the return, he said, I have just filed a letter that whatever is my original return, that is to be treated as return under section 148. If it is like that, then 143(2) cannot be issued. For 143(2) in cases of 148, one has to be very clear and very specific that the return of income in response to notice under 148 has to be issued. I have many cases with me right now where the assessee have filed the return of income. Assessing officer have issued 142(1) notice asking the detail, but he have never ever issued 143(2) notice. If 143(2) have not been issued in cases of 147 assessment, then it is also illegal. These are all void notices. So while drafting the grounds of appeal, my humble submission is that these kinds of the errors, legal errors which have been committed, procedural errors which have been committed by the assessing officer has to be challenged first. Then come to the factual part. You may be so much strong in your factual part, no doubt about it, but always challenge your orders in legal ground first and then come to the factual part. So that is what I can say while taking the grounds of appeal before the CIT. Then there is the 153A and 153C orders. Avinash, one thing I'm just interacting between. एक जरा उसको भी जरा explain कर दो the sanction, the validity of sanction. नहीं सर, अभी पूरा आऊंगा सर मैं बाद में ना. अगर आप कहते हो तो इसमें और भी आ जाते हैं. इसके साथ नहीं 147 कोई कर रहे हो ना, उसके साथ साथ में that issue would also get settled. हाँ, there is. अब आपने कहा है तो ले ही लेते हैं सर. Sir, what is important, one more thing which is important is whether the appropriate approval have been taken by the assessing officer from the respective officer. So अगर वो 4 साल के beyond अगर आपका खोल रहे हैं या आप 3 साल के बाद का खोलेंगे आगे जाके, अभी तो पिछले वालों की बात करते हैं, अभी अगले वालों की बात नहीं करते. So it has to be, there is a proper approval by the CIT or the JCIT as the case may be. और वो sanction, वो जो sanction हुआ है, वो जो approval हुआ है, that has to be with application of mind. So merely sanctioning, merely approving the grounds, approving the issue of the AO does not serve the purpose. The CIT or the JCIT, whoever the officer who is approving it, has to apply his mind. And while after applying his mind, he has to write why he is sanctioning the particular issue of notice under 148A, 148 or 148A now. So this is also important. So third thing, when we talk about sanction, this is also important that the sanction has to be prior to issue of notice under section 148. So in one of the case, or rather 2 of the case, when I asked for the digital trail by the AO, so I found that the AO have issued me a notice on 28th of March. However, the sanction is being given by the CIT on 31st of March. So notice पहले issue हो गया और sanction बाद में दी गई. और ये कहाँ से पता चला सर? ये digital trail जो उन्होंने हमको भेजी, जिसमें उन्होंने CIT के approvals है, जिसमें उनका digital signature लगा हुआ है, that is on 31st of March. So that itself become a ground that the notice which have been issued under section 148 is illegal because there is no approval which have been taken in that particular case from the CIT. Approval was taken subsequently, which is evident from the digital trail provided by the
department itself. So that itself also become a ground of appeal which is substantiate enough. और CIT appeal sir आपको relief दे या ना दे इन grounds पे, ITAT will provide you the relief within 1 minute. उसमें वो कुछ नहीं सुनेंगे, 1 मिनट में आपको जो है इन सब मैटर्स में रिलीफ मिलेगा. So that is important, but you have to take those grounds in while drafting your CIT. अविनाश भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिजिटल ट्रेल देने से मना कर दिया. मना कर ही नहीं सकते सर. आप इन्वेस्टिगेशन करो, फाइल की इंस्पेक्शन करो. सर वो ऐसा ऑर्डर आगे आप करेंगे, मगर उन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस, मेरे 7-8 केसेस में उन्होंने सब में सेम चीज लिख के भेज दी, वो केस लॉ साइड कर दिया ट्राइब्यूनल का कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एओ टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन. नहीं, डिजिटल ट्रेल अप्रूवल तो देनी पड़ेगी. देनी चाहिए बट नहीं दी उन्होंने. नहीं सर, तो दिस बिकम्स अ ग्राउंड. वो तो हम लिख ही रहे हैं. वो तो वही ग्राउंड बन जाएगा. वो तो श्रीवास्तव जी आप कुछ कह रहे हैं, वो म्यूट हो जाओ. नहीं पुरी साहब, एज फार एज अप्रूवल इज कंसर्न, ये तो उनको देनी ही पड़ेगी कि भाई दे हैव टू प्रोवाइड अस टू व्हेन वाज द अप्रूवल, हु हैज ग्रांटेड द अप्रूवल, व्हेन वाज the approval granted, and what is what the is the kind of approval? What is the kind of approval? What has the CIT stated in that? देखिए, हमने तो ये मांगा था कि when was the information received from the investigation wing, when was the satisfaction note prepared, when was the satisfaction note sent to the for to a competent authority, when was the receipt from the competent authority, what is the note of approval. सर जो पहला वाला केस है ना सर, when the information received वो नहीं देंगे. That may not be relevant. उसके बाद का सारा देंगे. बाकी इसका rest. बाकी ये they are bound to give. हाँ, they are bound to give. Even when the satisfaction note is prepared, ये भी शायद वो नहीं देंगे किस दिन, लेकिन अप्रूवल के लिए किस दिन भेजा ये आपको दे देंगे. किस दिन अप्रूवल हुआ ये भी इनको देना पड़ेगा, और अप्रूवल में CIT ने क्या लिखा ये भी उसे देना, ये भी उन्हें देना. अब RTI में मांगिए ना ये इन्फॉर्मेशन. अब मांगेंगे ना. RTI में मांगिए और नहीं देते हैं, then you have an alternative, you have a right of appeal also. 29 मार्च को रिजेक्ट कर दिया और 31 का ऑर्डर दे दिया. सर कोई दिक्कत नहीं है सर, आप है ना सर, आपने कुछ नहीं करना. देखिए मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, हो सकता है वैसे ऐसा होता नहीं है, बट आई डोंट नो आपके केस में शायद टाइम लिमिटेशन की वजह से ये किया होगा. सर आपने कुछ नहीं करना, आप एक एप्लीकेशन चिट्ठी लगाओ. किसको लगानी है सर? जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, किसी और को नहीं लगानी. जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को लगाओ, उसकी कॉपी कर दो फेसलेस, चीफ कमिश्नर फेसलेस, कॉपी टू दी CIT जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, कॉपी टू चेयरमैन CBDT. सिंपल. आप उसको बोलो कि मैंने ये मांगा था और आपने मुझे देने से डिनाई कर दिया, अब मुझे CIT अपील फाइल करनी है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी जाए. ठीक. और ये इन्फॉर्मेशन विद इन 7 days दिया जाए, क्योंकि मेरे पास 30 दिन का टाइम है टू फाइल एन CIT अपील. सर 7 दिनों के अंदर, और आपको कुछ नहीं करना सर, सबकी ईमेल आईडी अवेलेबल है. ठीक है. घर बैठे बैठे एक मेल भेजो सर, ना 24 आवर्स में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए. ठीक. पुरी साहब एक CC इसमें और कर दीजिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी. रेवेन्यू सेक्रेटरी को चेयरमैन को कर दी बहुत है सर. नहीं, रेवेन्यू सेक्रेटरी, लेट द रेवेन्यू, दे विल नो एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन CBDT, what is happening in the department. सर फिर तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी कर दो. नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर will not look in, but रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो who's on a regular basis वो supervise. Yes. So revenue secretary is a better. Revenue can make a copy to revenue secretary, or maybe sir, maybe if you do not receive anything in 7 days, then you escalate it to revenue secretary and others. उसको भी लूप में ले आइए कहीं ना कहीं. अगर आपकी रिजेक्शन हुई है ना, तो सर ये रिजेक्शन itself is invalid. ठीक है. And this becomes a technical ground. लीगल ग्राउंड बन जाएगा कि भाई आपने उससे सर आपने कोई गलत चीज थोड़ी मांगी. What you have asked for is the approval note, the satisfaction note, and it's my legal right. Exact dates when the respective satisfactions have been taken. कब आपने बनाया, कब गया, कब अप्रूवल आई, कब नोटिस इशू हुआ, ये तीन चीजें तो बाकी है. बिल्कुल. और सबको सिस्टम में they have to give you. And this is my legal right to ask for it. सर वो इन्वेस्टिगेशन से कब आई वो नहीं बताएंगे, बाकी सब आपको दे देंगे. और ये भी नहीं बताएंगे कि सेटिस्फेक्शन नोट कब बनाया था. वो तो उस इडियट ने, एओ ने उसके असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट बढ़ा दिया है. अतुल जी प्लीज सर, नो एओ इज इडियट, ही इज लर्नेड. अभी रवि जी ने बताया था ऑल एओज आर लर्नेड. अब वो है या नहीं को कोई बात नहीं, बट एज ए काउंसिल आई बिलीव दैट वी शुड टेक एन हैबिट टू से ऑल द असिस्टिंग ऑफिसर एज लर्नेड एओ.
Sir, I withdraw my words. The learned AO. Yes. Let me share with you. Long back, there was a member of the tribunal who was also commissioner, who was commissioner from the revenue side. Commissioner income tax भी थे. तो एक बार कभी हो तो वो इनफैक्ट ही टोल्ड अस कि भाई हमेशा लिखो, अगर किसी को कहना कि तुम गलत हो तो आप उसको 2 बार लिखोगे द लर्निंग ऑफ परसेंटेज, लर्निंग एज AO AR और लर्नड DR और लर्निंग एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लर्नड CID, लर्नड जरूर लिखो. जब आपको कहना है कि वो गलत है, लर्नड जरूर लिखना चाहिए. सर वो भी तो लिखते हैं लर्नेड काउंसिल ऑफ द SSC. नहीं फिर यार हम तो लर्नड हैं यार. तो वो भी लर्नेड है सर. चलिए सर, on a lighter note, but yes, in your case, I believe that itself become a ground, and you have to take all this. However, there is a problem which I am also facing in many cases, whereby if the case was represented by somebody else, or if the case was an ex parte case, then how we will get all these things, specifically when it is a case of 148, then what will happen in all those cases. So we are also struggling about it. But yes, where it has been specifically denied or rejected, then yes, it is a fit case that you can refer it to the board, whereby they will look into the matter. And Puri Saab, believe me, when you send it to the board, they will look into it. So in one of my order, what happened, that the case was 148. As per the instruction available, as per the information available with the department, some bank have shown that some money have been deposited in my account in crores during demonetization. I have stated that I never opened any account in that bank. I have stated, given an affidavit also, that no account have ever been opened by me. Then I have taken a letter from the bank stating that such and such account which have been reported or which have been shown in this AIS do not belong to me. Still AO have passed an order against me stating that because I have the information, this money belongs to you and you have been added under section 668 add kar diya. I have sent this order to the board stating that what more an SSC can give to prove that the account does not belong to him, whether your assessing officer should not have that much courtesy or process that he should send somebody to the bank to verify that if it does not belong to the SSC, then who is the person whom this account have belonged, or he should send a notice. Sir, I received a call from the person who have passed this order. So action होता है सर डिपार्टमेंट. मगर अविनाश जी प्रॉब्लम है 20% की तलवार तो लटक गई ना सर के ऊपर. सर कैसे ले लेगा सर जब मेरा अकाउंट ही नहीं है, मेरा सब कुछ नहीं है. Then all these cases now they have to be reported to the board very categorically कि जब हमारा है ही नहीं, हमने CIT को अप्रोच किया, then they are saying we will put this on a priority early hearing of the appeals. We are going ahead कि भी हमें early hearing मिलेगी उस केसेस में, तो हम early hearing में जाके उसको नील कराएंगे. But yes, लीगली तो तलवार लटकी है ही है. नहीं पुरी साहब, उसको अविनाश उसमें कहना था भैया उस अकाउंट से रिकवर कर लो. उस अकाउंट से रिकवर करो मेरा. हाँ ठीक है, ले लो वहां से पैसा जितना सारा ले लो. हाँ सारा ले लो वहां से, जो लेना वहीं से ले लो, बस मेरे को मेरी जान छोड़ो. उस अकाउंट में तो होगा ही नहीं ना कुछ आज की डेट में. तो आपको क्या फर्क पड़ता है? वही उस जिसमें जमा हुआ तो अकाउंट से ले लो, या गेट इट ट्रेल आउट ऑफ दैट अकाउंट. वो मनी पैसा कहाँ गया. ठीक है सर, चले सर आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 153A ऑर्डर और 153C ऑर्डर. So these all belongs to the search assessments which have been conducted during the search, and either to the same party or to the adjacent to that जिसके यहाँ search हुई. So all kinds of a ground where you can held that this is an illegal search. Warrant sign नहीं था, warrant backdated था, whatever way of technical ground you can take it on the search process itself. Those can be taken in those appeals. Apart from that, in search cases, there are many times where there are protective assessments. So protective adjustment कर दी जाती है. एक के हाथ में substantive adjustments होती है और बाकियों के हाथ में protective adjustments होती है.
So always take a ground for deletion of protective adjustments also. I have seen few appeals which have came to me whereby these are all search cases. The income is assessed in A and there was a substantial addition, substantive addition which is made by in A, and correspondingly they have made some protective adjustment in B, C and D. While filing the appeal in A, they have challenged it. They have said that this has to be deleted and they have taken a ground, but in B and C, they have not taken a ground whereby they are challenging that we should not made these substantive, these protective adjustments needs to be deleted. Suppose after a level, maybe High Court, maybe Supreme Court, if this addition was deleted in A. So in the case where there is a substantive addition, if this has been deleted in A, and then what will happen? Then the protective of B will become substantive. Then where he will file an appeal against it? राजेश जी समझ में आ रहा है? सर A में substantive addition कर दी और B और C के अंदर protective कर दी. जी सर. पता चला सुप्रीम कोर्ट में जाके A की डिलीट हो गई, अब B में प्रोटेक्टिव सब्सटेंटिव हो गई, बट अपील में लिया ही नहीं ग्राउंड. अपील में ग्राउंड नहीं लिया तो कहां से करोगे? So even if because he made the assessee or the council may have thought कि ये तो सिर्फ प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव में ना डिमांड रिकवर हो रही है ना कुछ हो रही है, इसलिए इसका क्या करना है ग्राउंड लेके. So must be challenged. प्रोटेक्टिव भी आपको चैलेंज करनी है और प्रोटेक्टिव भी डिलीट करवानी है कि भाई आप क्यों सोचते हैं कि प्रोटेक्टिव क्यों होनी चाहिए. ये थोड़ी कि डिपार्टमेंट कह रहा है ए में नहीं होगा तो बी में नहीं होगा तो सी में नहीं होगा तो डी में. आप बी सी डी कहे कि सर ए की है तो ए ही देखे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे. फिर जब ए की डिलीट हो जाएगी तो आपका ए की डिलीट होगी, बी सी डी ऑलरेडी डिलीटेड हो सकती है सब्सिक्वेंटली, तो फिर डिपार्टमेंट हैव नो केस इन दोस केसेस. तो ये भी आप प्रोटेक्टिव एडजस्टमेंट का भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि व्हेन व्हाइल डूइंग फॉर सर्च केसेस स्पेसिफिकली प्रोटेक्टिव एडजस्टमेंट्स या एडिशंस जो होती हैं वो भी हमें ग्राउंड ऑफ अपील में लेनी है. नेक्स्ट 92 CD का जो हमारे ऑर्डर होते हैं इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड होते हैं और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स और ट्रांसफर प्राइसिंग की बेसिकली इसमें एडिशंस होती है. हियर वी हैव टू ऑप्शंस, either to go for a DRP route or we should go for a CIT appeal route. In case of a DRP route, in those cases where there is an addition on account of transfer pricing or in cases which belongs to a non-resident. So in all those cases, assessee cannot issue a final order. It has to issue a draft order. Or its draft order ke against you, assessee have 30 days time either to go for and file an objection before the honorable DRP dispute resolution panel, or they may file a case, they may wait for the final order and after receiving the final order he may go for a CIT appeal. अब सर इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए हमारे पास जहां पे ड्राफ्ट ऑर्डर पास होना चाहिए था बट असेसिंग ऑफिसर और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हैव पास द फाइनल ऑर्डर्स. So there is no opportunity which is being given to the SSC for applying before DRP. They have straightforwardly made passed an order which is a final order. So sir क्या करें इसका? This is an invalid and illegal order. So always take a ground that this is an illegal order. Normally in those cases we used to go in a writ petition to High Court straightforwardly asking the High Court, requesting the High Court to quash the assessment order itself because it is barred and the opportunity have not been given to the SSC to go for DRP. So Srivastava ji please mute कर लो sir. So इसमें अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है जहां पे ड्राफ्ट ऑर्डर आना चाहिए था और ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं आया और सीधा फाइनल ऑर्डर आया, तो then you may go for a writ petition also. Rajesh ji will be there to help you out in this because he is advocate, he can represent. But in CIT appeal also always take a ground. Then there are few cases which have come across whereby the draft order has been issued on 21st of March allowing the SSC to file a objection before DRP
and by 31st of March the final order have also been passed. So 31st March से पहले draft order भी pass कर दिया और final order भी pass कर दिया. So both orders have been passed by the by the learned AO, whereby they have said the draft order has also been passed, the final order have been passed, but the statutory time period of 30 days have not been given. So that also becomes a ground. That statutory days have not been given. Either you go for a rate petition or you may take a ground before CIT appeal. In ITAT, this is a very solid ground whereby the ITAT might quash these orders by saying that the statutory period of 30 days have not been provided to the SSC. Hence, the order is invalid and needs to be quashed. तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि अगर ड्राफ्ट ऑर्डर आप दिया गया और 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं दिया गया तो उन केसेस में ये करना है. But unique case have come to me. Sir, what happened, Srivastava ji, in that particular case? Sir, I received 2 orders for the same assessment year. So I received one draft order whereby the additions made under transfer pricing is being given as a draft order, and then I also received a final order where the other additions is being made. So एक assessment year के 2 order मिले, एक में तो transfer pricing की addition है जिसका draft order है जिसमें मैं DRP जा सकता हूँ, और दूसरा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दिया गया मुझे जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग की कोई एडिशन नहीं है, अदर देन ट्रांसफर प्राइसिंग की जो एडिशन है वो मुझे दी गई. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू विद दीस 2 ऑर्डर्स. सो देयर इज अ ड्राफ्ट ऑर्डर आल्सो बीइंग गिवन टू मी, देयर इज अ फाइनल ऑर्डर व्हिच हैव आल्सो बीन गिवन टू मी. नाउ व्हाट टू डू इन दीस 2 काइंड्स ऑफ ऑर्डर. क्या करेंगे सर इसमें? श्रीवास्तव जी भी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए. In fact, my observation in this would be very simple. Go in a writ that both the orders lack jurisdiction. No, sir. Draft order, sir. Draft order lacks jurisdiction in the sense that you have a draft order. When you are issuing a draft order, it has to consider the adjustments proposed by TPO. No, that is there. Sir, in the draft order, the TPO adjustment was there. Then The other other grounds are not there. No, if other grounds are not, that is what they. If it ought to include adjustments on other grounds as well as on TPO. दोनों होने चाहिए थे. अब आपने 2 अलग-अलग कर दिए. It cannot be कि आप दोनों को merge कर दें. Both are bad in law. Both are bad in law. And maybe because this is only at the draft before the final order. This is, you are here before the final order. So the best alternative, what I think, is go for a writ. You're absolutely right, sir. Yeah, Puri Saab, you want to say something? मैं ये कह रहा हूँ कि उसे जो आपको फाइनल ऑर्डर दे दिया, बिकॉज ड्राफ्ट ऑर्डर के तो दिया नहीं, एक उसे फाइनल ऑर्डर दे दिया, तो फाइनल ऑर्डर तो फाइनल है, आप उसी को चैलेंज करेंगे. But the question is, if the TPO have given an order and you have given me a draft order first, and there those draft order points have not been considered in final order, then final order is void ab initio. Agreed. It's a void order. Agreed. So one way is that you go to the High Court and say that both orders are invalid. They are both are illegal orders. In draft order, you have not considered the additions made there. In the final order, you have not made the additions of the transfer pricing. So as procedurally, both are wrong. So both needs to be quashed. But High Court might give you an order where they say combine both the orders that give them. Go back. Yes. Go back to the AO. Yes. And combine both of them. In my what I did in those cases is, against the draft order, I went to the DRP stating that this is a draft order what I received and I am before you. And in one of the objections that I have taken, that in this I have also received a final order, and according to me that final order is an illegal and invalid order, and please direct the AO to withdraw or nullify that final order. In CIT appeal against the final order, I also went to the CIT appeal and stating that this final order is an invalid order because it do not consider the additions made by the TPO, hence it is an invalid order. Then I also challenge all the different grounds which have been taken, that which have been additions made by the AO, that these are all not valid.
So in both the cases, I am before, in one case I am before DRP, in another case I am before the CIT appeal. And in the hearing, the DRP said, how come this have happened? How come this draft order is a final order, and how can it is a valid order? Because this is up to the DRP to consider. So DRP want to take a view that this draft order is illegal. So they may quash it. They may simply say that no addition is required in this case. So let us see what will happen. But things can come like this also, whereby we have two orders for the same assessment year, though it is an exceptional case. Only in one case I have received this kind of orders, but normally these kinds of orders do not come. I'm hearing it for the first time. मेरे किसी केस में ऐसा हुआ ही नहीं. What is the scope of 263 in this? Sorry? Scope of 263, possibility of 263 in this. Sir, 263 तो सिर्फ फाइनल ऑर्डर के ही हो सकती है ना. सर फाइनल ऑर्डर में 263 हो भी जाएगा मान लीजिए. वो कहेंगे कि आपने टीपीओ वाला इसमें कंसीडर नहीं किया. It is definitely it is erroneous. There it is erroneous that a TPO's proposals have not been considered in the final order, and the commission will take the final order as the order and set aside the order. But he's already before the CIT appeal. That is there, sir. उससे क्या फर्क पड़ता है? 263 तो हो ही सकता है. I think 263 हो जाएगा ना. 263 होके फाइनल ऑर्डर हो सकता है कि फाइनल ऑर्डर को एरोनियस कह के उसको नलिफाई करके और उसको फ्रेश असेसमेंट के लिए क्या नहीं, और उसमें फिर उसके बाद वो जो है दोबारा, लेकिन फिर वो ड्राफ्ट ऑर्डर कैसे नलिफाई होगा सर? वो तो ड्राफ्ट ऑर्डर कैसे नलिफाई होगा? उस पे तो डीआरपी एक्शन ले सकता है. ड्राफ्ट ऑर्डर पे डीआरपी के पास पावर ही नहीं है, क्या एक्शन लेगा? नहीं, but they have to quash it ना, that it is null and void. की पावर ही नहीं है डीआरपी के पास. They simply say addition under transfer pricing in this case is nil. Nil adjustment का ऑर्डर पास कर सकता है. It is interesting, sir. Let us see what will happen in this case. बता जरूर देना. हाँ. शेयर कर लेना है. अभी तो सर किसी को फुर्सत ही नहीं है ना देखने की क्या कर रहा है. अभी तो सिर्फ फाइलिंग हुई है. चलिए सर नेक्स्ट अंडर 154 ऑर्डर कैन ऑल्सो बी चैलेंज. जो भी रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर होते हैं, these are liable to be appealable orders. So if you are not satisfied with 154 orders or demand notice under section 155, so then you can file an appeal against them. So आप इसके कर सकते हैं, हमें सबको पता है. 237 में हम रिफंड मांगते हैं. अगर आप रिफंड ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आप इसमें फाइल कर सकते हैं. All penalty orders are also appealable order before CIT appeal. 201 के जो हमारे TDS के ऑर्डर्स होते हैं, these are also appealable orders. So आपका 201 सबसेक्शन 1 के असेसमेंट ऑर्डर और 201(1)(a) का इंटरेस्ट का भी ऑर्डर आता है कई केसेस में, जहां पे आप फॉर्म 26 फाइल कर देते हैं और उसमें कहते हैं कि बिकॉज TDS have not been deducted but the deductee have already paid the tax and taken it in the return of income. So वहां पे 201(1) की डिमांड 0 हो जाती है और 201(1)(a) की खाली इंटरेस्ट की डिमांड रहती है. So that order is also appealable before CIT appeal. अविनाश भाई, एक मेरे पास इंटरेस्टिंग केस आया पेनल्टी का. हाँ जी. उसपे CIT अपील ने डिसमिस कर दी अपील फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन और उसको 18 नवंबर को ITAT ने रेस्टोर कर दिया वापस CIT के पास. फिर क्या डिसमिस किया, क्या दोबारा बताया फैक्ट? उसने डिसमिस कर दिया फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन की कोई अपीयर नहीं हुआ, मैं उसको डिसमिस कर रहा हूँ. एक्स पार्टी और ITAT ने उसको रेस्टोर कर दिया टू द फाइनल. CIT अपील की अपॉर्चुनिटी. ठीक है जी. देखिए, इवन CIT अपील कैन नॉट डिसमिस इन लिमिने. देख she should not have, तब उन्होंने वापस रेस्टोर कर दी. It was not dismissed, sir. Basically, he have passed an order stating that whatever grounds have been rejected. डिसमिस कर दी ना उसने सारी. नहीं, अपील डिसमिस की for on merits or for non prosecution. For non-prosecution. That he cannot do. He should not have done, but हो गया. तभी तो ITAT ने वापस स्टोर कर दिया. 18/11 को किया और 25/11 को AO ने पेनल्टी इम्पोज कर दी कि द केस since it has been dismissed by the CIT appeal, I am imposing penalty. और वो भी एक्स पार्टी. नहीं, एक मिनट सर पहली बात ये है, नहीं पेनल्टी आपकी जो मेन अपील थी वो मेन क्वांटम अपील थी या पेनल्टी अपील थी? क्वांटम अपील थी. तो कर सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. तो अब हमको उसकी अपील भी करनी पड़ेगी.
हाँ, अब आपको पेनल्टी की अपील अलग से अलग से करनी पड़ेगी। हम्म, तो मेरा सर कहते नहीं आप चिट्ठी लिख दो, गलत हो गया। मैंने कहा भैया नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं होता। Sir, once a order is passed, It has to be appealed against. it has to be appealing. मेरे केस में क्या हुआ सर, I have filed an appeal, quantum appeal before the CIT appeal, and I have stated to put my penalty proceeding in abeyance till the disposal of CIT appeal. Then CIT appeal have passed a negative order. I have furnished that appeal immediately to ITAT. I have already filed an appeal and asked for an early hearing. My appeal was decided in an early hearing and I received a favorable order from ITAT whereby the ITAT have given me all the relief. After 2 days of my ITAT order, I received a penalty order stating that because your appeal have been rejected at CIT appeal, hence I am imposing a penalty. Then I went to the AO and said that my ITAT have already decided in my favor. He said, but I have not received this ITAT order. That's why he have imposed it. Now, what is the remedy available with me or with the AO? Can he pass a 150 order, 154 order? No, he cannot. So in this case, I have no option but to file a CIT appeal against the penalty order. And stating that in penalty order, stating the CIT appeal that because ITAT have already deleted my edition, Quantum appeal. that my quantum appeal have already been allowed, hence penalty cannot be levied. Only by writing these few lines, the CIT appeal will allow my appeal. Then only AO can dismiss or they and remove that demand. Right. So अगर कोई ये सोचे कि पेनल्टी अगर क्वांटम अपील फेवर में हो गई है और आप जो आपकी पेनल्टी ऑर्डर होने के बाद 154 हो सकता है, नहीं हो सकता. If there is a penalty order, then it has to be appealable. अपील करना ही पड़ेगा. We have no other option. An order is an order. It has to be appealed against. No choice. Yes. Next 206C TCS से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनकी अपील हो सकती है. 170 सेक्शन जो है वो सक्सेसर का है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए कोई मर्ज हो गई कंपनी, सो ए कंपनी बी में मर्ज हो गई तो उसकी अपील अगर फाइल करनी है तो बी करेगा. ए की डेथ हो गई, देन हु विल फाइल एन अपील? लीगल हेयर विल फाइल एन अपील. पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गई तो उसके सक्सेसर जो कौन होगा, जो पार्टनर्स हैं वो करेंगे. जो भी है उसका जो 170 में जो भी सक्सेसर का प्रोविजन है, दे विल बी अलाउड टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड अंडर द अबव सेक्शंस. अब सर देन देयर नेक्स्ट कम्स इज कि आपका कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती. सर दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. सर अगर एक लोअर डिडक्शन का मैंने सर्टिफिकेट अप्लाई किया एंड आई हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 197 ऑफ द एक्ट, देन इन नो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन के अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई अपील नहीं की जा सकती. इसके अंदर सिर्फ 264 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. 220 का कोई इंटरेस्ट चार्ज का कोई ऑर्डर आया, उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती. ऑर्डर फॉर रिफ्यूजल फॉर स्टे ऑफ डिमांड. स्टे ऑफ डिमांड कौन करता है सर? स्टे ऑफ डिमांड असेसिंग ऑफिसर करता है और उसके लिए सर्कुलर है 20% जमा कराओ तो आपको स्टे ऑफ डिमांड हो जाएगी, या आईटीएटी के पास पावर है कि वो स्टे ऑफ डिमांड कर सकती है और उसके लिए भी एक्ट में 20% प्रिस्क्राइब्ड है. बट हाउएवर वी हैव रिसेंटली रिसीव्ड judgment from the court, High Court and Supreme Court, I think High Court, whereby they said that ITT is not barred by this 20% limitation and ITT can decide how much to be deposited. But normally CIT appeal की जब हम बात करें तो 20% डिपॉजिट करने के बाद डिस्प्यूटेड डिमांड का AO can stay. अगर AO ने स्टे नहीं दिया, he refused to grant the stay, then this is also non-appealable order. इसके खिलाफ हम कहीं पे भी कोई अपील नहीं कर सकते. And Avinash, here I will differ. Even CIT when you, because ये proceeding, these are two separate proceedings. Assessment के against आप लोग CIT appeal पे आ गए, and you also make a request to the AO to stay the demand. He doesn't do it. CIT appeal has independent power of his own to stay the demand. तो क्या लिखा है? Sir, the number of case laws on this, not only one host of case laws on this, that a CIT appeal can, and practically I have done it. I have practically also done it, not today, more than 20 years back.
The only thing that CIT appeal at that time was doing was कि साहब कि श्वासा जी हमसे स्टे मत करवाओ, आप ऐसे है अगले हफ्ते केस लगा लो, केस अगले हफ्ते लगवा लो, वो दैट इज अपील विल व्हाटएवर अर्ली हियरिंग में मैं कर दूंगा जो भी करना है. तो स्टे तो नहीं मिली ना, स्टे तो नहीं मिली ना. But no, there are starting with Allahabad High Court. It happened that CIT appeal has the inherent power to grant a stay. CIT appeal can do it. Generally, Anil ji करते Generally नहीं. नहीं. Generally नहीं करते. I think there is a difference of opinion here. CIT appeal, according to me, also have no power. But I think that the matter which is going on is that AO have refused to grant stay. Right. Whether that refusal order, Against the refusal order, yes. whether it is appealable Yes, or not. independent. That is what I said. It is independently of this. Against the when you file an original appeal, there itself you can, in fact, rather when you make a grounds of appeal, you must take this also as a ground. That in the meantime, kindly stay the demand. Generally, I include that as a ground. That in the meantime, the CIT appeal should stay the demand as well as though penalty के लिए भी लिख देते हैं कि stay the penalty proceedings also. मगर penalty proceedings is not that इतना उस पे emphasize नहीं करते. मगर demand के लिए हम जरूर लिख देते हैं कि भाई state demand जो है demand भी also be state. चलिए सर वो लिख देते हैं मतलब. But उसपे तो ये लिख दो has urged in raising such a huge demand and it should be state. That you can say as a ground. But otherwise, it rightfully I don't think CIT appeal के पास जा सकते हैं. देखिए because CIT appeal has a concurrent jurisdiction as far as the assessment is concerned. So wo when he can enhance the assessment, he can give you a stay also. But yeah, it started with the Allahabad High Court. It started with one of the cases, initial cases were Allahabad High Court. Thereafter there are host of judgments from different high court. चलो सर आज की डेट में आज की डेट में फेसलेस असेसमेंट में, फेसलेस अपील में कौन सा CIT आपको जो है स्टे ग्रांट करेगा? कोई नहीं करेगा. वो देखिए ये जो एक लीगैलिटी वाले लीगल इश्यूज जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे हम लोग को आगे वी हैव टू टेक इट फर्दर. ये नहीं कि ठीक है वो नहीं करते, कहीं ना कहीं लेके जाए उसको. वो समटाइम it may be part of the law sometime. अनिल जी होता पता है क्या है, जब उसने हाई पिच डिमांड रेज कर दी, हाई पिच असेसमेंट कर दी, तो डिमांड तो हाई पिच ही हो जाएगी नेचुरली. तो इसके अंदर क्या ग्राउंड लोगे आप? चलिए सर आगे. आई थिंक चलिए आगे इसको पूरी साहब मैं आप we'll discuss it later independent. नहीं we'll sit over a cup of tea in your office. Okay. Welcome sir, welcome. I think now there are two questions which are I find them a pertinent question. So Anil Sethi ji ने दो क्वेश्चन पूछे हैं. One is AO has obtained a valuation report from DVO but has refused to provide the copy of the same. Can SSC take this ground in appeal? Sir, if these valuation report of the DVO have been used against the SSC, whereby he have made addition based on this DVO report, then yes, you can take this demand, and independently also, you should ask for a certified copy of the same by making an inspection of the file or taking copies of the document. Assessing officer has to provide you these documents because on these basis only he have made an addition to it. Second question he have asked is when a specific addition and when a specific section 50C exists in respect of capital gain, can AO obtain a valuation report under 142A? Sir, 142A और वो दोनों concurrent jurisdiction है. आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया. But yes, अगर आपके सर्कल रेट से कम में आपने कोई लैंड या बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है तो आपको 50C आता है. बट 50C वैल्यूएशन को तो वो वैल्यू करा ही सकता है ना कि दैट व्हाट वुड बी द सर्कल रेट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. I come across one case. This is a very important. I have heard this case where the property have been sold on above the circle rate. So let's say the circle rate is 5 crore. The property is sold at 6 crore. The AO have put a valuation officer on the job, and valuation officer says that the valuation is 10 crore. So circle rate is 5 crore. Transaction done at 6 crore. The valuation officer gives a report at 10 crores. And he have made an addition. I filed an appeal.
and assessing officer and CIT appeal have admitted my appeal, allowed my appeal by stating that any valuation above 50C cannot be done. So the maximum cap is 50C, but if you have made a transaction which is above 50C itself, then no addition can be made. So in those cases, agar valuation zyada bhi aati hai, to according to me, there is no problem and nothing can be done. However, on a reverse case, agar wo 56-210 का matter है, where 56-210 में आपने कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई और एसेट ली है, जहां पे वो आपने कहा कि इसकी वैल्यू 6 करोड़ है और मैंने 6 करोड़ रुपए देके ली, बट वो कहता है कि नहीं इसकी वैल्यू जो है 10 करोड़ है वैल्यूएशन ऑफिसर, तो वहां पे इसको यूज किया जा सकता है. अगेन इन दोज केसेस आल्सो आई बिलीव दैट 50C इज अ स्पेसिफिक सेक्शन व्हिच डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लैंड एंड बिल्डिंग. So I believe that will prevail over 142A. That is my understanding of the law, and you can always take that ground in while filing the appeal. Srivastava ji, आप कुछ कहना चाहते हो? Whether it is in under 142(1) or even under 50C, a reference made to valuation officer even by the AO, that valuation. But in this case, when you say that it is 5 crore circle rate, 5 crore transaction at 6 crore, that's the end of the matter. Now, you cannot, beyond this, you cannot do anything. Beyond circle rate, you cannot go. Beyond circle rate, the moment it goes beyond circle rate, there in view of the specific 50C, in one of my cases, the AO, similar thing was there. The circle rate was higher, transaction was lower. The matter I suggested that we requested for a reference to the valuation officer. And you will be surprised to know that the valuation officer valued the property at even lower than the agreed consideration, which was much lower than the circle rate. बढ़िया हो गया, zero addition हो गई. No, zero addition, because then he finally said that the value is less than the agreed consideration, less than the agreed consideration. But since the SSC has already, the fair market value is less than the agreed consideration, but since the SSC is already declared so much, so we take that as a fair market value. Okay, sir, now I think we have only 15 minutes left and there are many questions which are there. So I'll quickly wrap up 4 or 5 things which is important in filing, which are technical matters. So first of all, sir, the appeal has to be filed within 30 days, 30 days from the date of receipt of the order. So if you received the order on 11th of April, for example, then that day has to be excluded from 12th onwards, from 11th onwards, 12, 13, 14, the 30 days time will be there. If anybody do not file an appeal within 30 days, then yes, he can file an appeal even after 30 days, but he have to ask for the condonation of the delay in filing the appeal, and he has to justify what have prevented the SSC to file an appeal beyond the period of 30 days. The appeal can be filed, the period of limitation of 30 days will start from the day the assessment order is being received by the SSC along with the demand notice. If the demand notice have not been served on the SSC, then the period of limitation is not applicable. So it will be applicable from the day the demand notice is served or received by the SSC. If somebody have not received any demand notice, have not received any assessment order, then what to do in those cases? In those cases, you may apply for a certified copy of an assessment order. Nowadays, it is already available on the portal, but in few cases, the order is not being reflected on the portals. Then you may file an application before the jurisdictional assessing officer stating that portal do not reflect the assessment order and you need a certified copy for that. And the period of limitation of 30 days will start from the day when you receive the certified copy of the orders. But I have seen in few appeals, in one of the appeal what I have dealt in IT80, they have said that order was passed on, let's say 31st of March 16, but they do not get the copy of it, and they got the copy in 2017 when their bank account got attached. In 2017, they got a certified copy of the order, and then they file an appeal within 30 days. But the date of communication of order, they have written it is as 31st March 16 only, which is absolutely wrong. It is not date of passing of the order, it is date of communication.
that when you have received the order and based because it was 2016, CIT appeal simply rejected that appeal, stating that he do not condone the delay, and matter went to ITAT. When I went to ITAT, I said this is a mistake which have been filed, which have been mentioned wrongly in the Form 35 filed by the SSC to the CIT appeal, and then they have restored this matter back to the file of CIT appeal. So please be careful. They have asked you two dates. One is the date of the order, which is date of passing of the order, and another date they are asking is date of communication of the order to the SSC. So whenever that order has been received by you, then on that day, particular day, you will say that this is a date where on which I have received the order. There are many cases where email which has been sent to the SSC, but if it is not opened for so many days, then when he opened the email, that may be also regarded as the date of communication of the order. But 30 days is statutory time which is allowed. Beyond 30 days, you may also file an appeal, but where you may request for condonation. And condonation has to be along with the reason why you are not able to justify it. In the presentation, we have made many cases that what are the cases which where generally the condonation is being given along with the judgments, that what is the sufficient cause for delay in filing appeal. So along with all the judgment we have mentioned in this presentation. So you may also look into it, that what are the genuine delays which have been accepted. Then what the fee, the appeal has to be followed by the prescribed fee. So prescribed fee is that if the return income is return income, if the assessed income is 1 lakh or less, 250 rupees, 1 lakh to 2 lakh 500 rupees, 2 lakh and above 1 lakh rupees. अभी ये इतने पुराने हो गए हैं सर, 2 लाख रुपए की होगी तो असेसमेंट वैसे ही नील की हो जाएगी. बट यस, इन केस ऑफ फॉर्म्स एंड कंपनी हो सकती है, बट अगर 2 लाख रुपए तक है तो 1000. इन ऑल अदर केसेस इट इज 250. सो ऑल पेनल्टी अपील्स अगर आप फाइल करेंगे तो 250 रुपीज. ऑल अपील्स रिलेटिंग टू TDS TCS है 250 रुपीज. ऑल असेसमेंट्स विच इज व्हाट आई कैन से लॉस की जितनी असेसमेंट्स है जहां पे एडिशन होने के बाद फिर भी लॉस बचा है, so in all those cases also 250 rupees to be done. It has to be filed under the challan as demand raised by the department and under the head others. So tax में नहीं डालना, penalty में नहीं डालना, interest में नहीं डालना, others में आपको ये जो है डाल के आपको ये चालान जमा करना है और उस चालान की कॉपी along with form 35 आपको फाइल करनी है. So 250 rupees that you need to file, you need to pay minimum, maximum is 1000 rupees. What one has to be what one has to pay to the department as the appeal filing fees. बाकी कुछ हमने ये फॉर्म 35 आपको दिया है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, उसके अंदर क्या क्या डिटेल आती है, नाम आता है, पैन नंबर आता है, फोन नंबर और ईमेल आईडी प्लीज आप प्रॉपरली डालिएगा. रीजन बीइंग in these days all the notices have been issued over mail itself, so whatever email ID, whatever you put it in form 35, that has to be regularly checked. फोन नंबर डाल दीजिएगा, जनरली आजकल फोन आते नहीं है, बट स्टिल ईमेल आईडी हैज टू बी वेरी करेक्ट. यू हैव टू सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर और आप ऑटोमेटिकली डिन नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है, और अगर आपको वो डिन नंबर नहीं दिखाई दे तो देयर इज एन ऑप्शन दैट ऑर्डर विदाउट डिन, and from there you can also file an appeal for this. Then you have to give all the submissions, whatever you want to make, facts of the case, grounds of appeal, and if there is an additional submission वो देना है. अगर आपका within time filed है तो लिखना है there is no delay. अगर delay है तो उसका reason देना है कि क्यों delay है. वो सारा फॉर्म 35 आप जो है इसमें भर सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने, स्पेशल कैरेक्टर ये वाले जो दिए गए हैं, these are all not allowed. इसके अलावा आपको असेसमेंट ऑर्डर अपलोड करना है, आपको डिमांड नोटिस अपलोड करना है, और अगर आपके कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं दैट नीड्स टू बी अपलोडेड अलोंग विद फॉर्म 35. नॉर्मली एडिशनल एविडेंसेस के लिए we submitted that it is to be submitted at the time of hearing itself. बट आप पहले करना चाहते हैं आप पहले कर सकते हैं. 50 MB की फाइल साइज जो है उन्होंने दिया है, आप PDF में या जिप फोल्डर में वो अपलोड किया जा सकता है, दैट इज देयर. और अपील जो है आपकी DSC से फाइल होगी, और अगर कोई SSC है जिसका DSC नहीं है तो वो EVC से भी ये अपील फाइल कर सकता है, और ये अपील जो है आपकी फाइल हो जाएगी.
अपील के लिए जो ड्राफ्टिंग के लिए हमने आपको अभी तक जो डिस्कशन हुई वो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्रिस्प होनी चाहिए, बट ऑल ग्राउंड्स हैज टू बी कवर्ड, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, ब्रीफ फैक्ट्स होनी चाहिए, साथ में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, लॉ पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए, दैट व्हाट इज द फैक्ट, और फैक्ट्स जो भी हो दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एओ ने क्या गलत किया, इट इज ओनली द फैक्ट्स दैट आई हैव फाइल्ड माय रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दिस ऑन सच एंड सच डेट, द केस वाज picked for scrutiny either under section 143(2) or 148 notice or 147 whatever it is, and the AO have made addition on these grounds, and these all grounds are illegal, these all additions are illegal and needs to be deleted. Matter is over. Why illegal, why deleted, why he have made an addition, nothing is to be given in the facts. The facts is only facts. It does not contain your arguments, that one has to see, and it has to be brief also. Then there is no specific format what one can give, but yes, I have already discussed with you that how we should go. Initially we start with the legal ground and then we go to the factual ground. So in this presentation we have given you some specific specimen of the grounds which one can see from the slide that I have shown it to you, that these are the sample grounds what we have made for you for all the assessment years. My only submission is that always put ground number 7, ground number 8, and ground number 9, and ground number 1. So these are general grounds. So one is always say that order is invalid. It is not illegal in the eyes of law, on facts also. So it's a general statement, whether it is 143(3) order or 147 or 153. Order number 7 is for the provisions of interest under 234 ABC. If there is applicable, they have done it. 8 and 9. 9 is important. 9 gives you the right to add or delete or alter any particular ground during the appellate proceeding. So, for example, if I have prepared a form 35 and if I have done some kind of a ground and the SSC, my SSC goes to Rajesh Agarwal ji, because Rajesh Agarwal ji is more learned than me, and he said that there are 2 more grounds which is to be taken during the appellate proceeding. If I have written it ground number 9, then CIT appeals are generally allowing the additional grounds. If it was not written, then it is very difficult that CIT appeal will allow you any additional ground. So these additional grounds are important that we need to write there. So then on 148, I think we have already discussed satisfaction, change of opinion, and all these technical grounds one can take it. So that we have already discussed. So you can see it from our presentation that we have submitted. I think most of the things we have already covered during our discussion. So if there is any other questions, then I am happy to take up those questions, and presentation have already been given to all the participants. If you have any other problem, you can come back to us, come back to Rajesh Agarwal ji, that we will be happy to answer your queries. अविनाश भाई, एक ऑर्डर पे उसने काफी सारी साइटेशन दी है एओ ने। सर पुरी साहब एक सेकंड जरा, पहले अपन उनका ले लें। हाँ, आप तो बात कर ही लेंगे। ओके। राम बंसल जी, आप अनम्यूट करके पूछे अपना सवाल। नवनीत जीरत जी, आप भी अपना सवाल पूछ लें अनम्यूट करके। हाँ, अविनाश सर। Yes sir, yes sir. Can you hear me? Sir, इसमें, thank you sir. Sir, in grounds of appeal, suppose a wrong section has been quoted. वो फॉर्म में पूछता है under which section the 246A small a has been quoted instead of 246 capital A. No problem, sir. No problem. That they have made in the form only for the purpose of understanding by the CIT appeal that if there is an addition, under which section the addition was there. What is important is your complete ground, not the section part. So the subsections, in fact, even they don't matter too much. सर मैं कह रहा हूँ 14A को आपने जो है 40A भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. What is important is your complete ground. कि आपने complete ground में ठीक लिखा है या नहीं लिखा. वो ठीक लिखा है, ठीक है जी. राम बंसल जी, ask your question. Yes sir. Sir, in the penalty order 271D, they said the penalty proceeding in the case of the SSC is dropped.
and they have issued a demand notice of rupees 9 lakh rupees. So what we नहीं, should do? Why file appeal against the demand notice or against the assessment order? सर देखिए, पहली बात तो राम बंसल जी, अगर पेनल्टी ड्रॉप हो गई है तो पेनल्टी ऑर्डर पास ही नहीं हुआ होगा. If the penalty is being dropped, then it has to be dropped in the file. No order for dropping of the penalty can be made. So in this case, I believe that the position is something else. If it is dropped, then it is a fit case for CIT appeal, where you can say that simple, sir, this penalty have been dropped, but a demand notice have been received by you. Demand notice is under section 155 only, and I have already told you that 155 is an appealable order. So what you have to do is you have to file an 154 also, stating that if your order itself is nil, then you cannot raise a demand on me. And you also file a CIT appeal stating that my penalty have been dropped, then but there is a demand notice, so please quash it or instruct the AO to rectify it. दोनों चीजें कर दो आप. Thank you, सर sir. लास्ट ईयर जितने भी ट्रस्ट के केसेस आए हैं, जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के असेसमेंट ऑर्डर हुए हैं नील के, सब में जो डिमांड नोटिस आ गया है, बिकॉज दे हैव ट्रीटेड इट एज एओपी और उनकी 30% एमएमआर लगा के उन्होंने एडिशन कर दी. So in all those cases, we are before CIT appeal as well as we have filed 154 stating that कि भाई जब हमारे असेसमेंट ऑर्डर नील पे है तो आप डिमांड कैसे रेस कर सकते हो. तो आप दोनों चीजें कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. राजेश जी, आप म्यूट पे हो. हाँ, पुरी साहब आस्क योर क्वेश्चन. अविनाश जी, एक ऑर्डर में उसने केस लॉ काफी साइट किए हैं, मगर ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं दी, और उसमें से आधे केस लॉ जो है वो या इनकरेक्ट है या एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो शुड आई टेक दिस ग्राउंड आल्सो? नहीं सर. Normally if an assessing officer cited some case law, some judicial precedent in his favor, whether they are applicable in your case or they are totally different, that is the subject matter of your submission. So for example, if he have made an addition for you under section, let's say 43B or 68 or 69A, and he has cited 10 cases. So while making your submission for a particular ground of 68 or whatever is the ground, you say the AO have relied on these case laws, but they are not applicable, or you are here to distinguish them because of the following reason. आप एक टेबल बनाओ सुंदर सी, उसमें लिखो case law number 1, what AO said and why it is not applicable on you, because of the facts are different or question are different, whatever way it is. तो एक टेबल बना के जितने भी AO ने जितने भी केस लॉ दिए हैं एडिशन करते समय, आपको उनको रिवर्ट करना पड़ेगा. अगर वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे केस में क्या हुआ सर, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की हम जो है असेसमेंट हुई, और उसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में उसने एक केस लॉ दिया. उस केस लॉ जो था वो एक हेल्थ केयर का केस लॉ था और मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि बिकॉज these things are not satisfied, hence it cannot be treated as charitable institution who is providing health medical facility. और मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, उसने वो केस लॉ कोट किया, तो मैंने उसमें सिंपल लिखा कि भाई ये जो केस है, दिस बिलोंग्स टू दी मेडिकल केयर and I am a charitable institution, so if this case law is nowhere applicable on me, hence if this is not applicable, I distinguish the thing. तो उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं बन सकता. इट इज नॉट अ ग्राउंड कि भी उसने रॉन्ग केस लॉ किया, बट यस, जो भी आपका मेन ग्राउंड है उसकी सबमिशन में आप रिबर्टल दे सकते हो. नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था. मैं ये कह रहा हूँ कि उसने मान लो केस लॉ दिया है, वो केस लॉ वो ITR ही एग्जिस्ट नहीं करता. वो भी जो 664 तक आया है वो 674 बता रहा है. मैंने 674, 574, 474 केस लॉ को भी पढ़ के देख लिया, वो केस लॉ भी नहीं है. सर वो 154 का मैटर है. 154, ठीक है. दिस इज 154 मैटर. यू कैन आस्क कि भाई ऑर्डर जो है आपका रिक्वायर रेक्टिफिकेशन, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, द केस लॉ साइटेड बाय यू with certain ITR number or whatever appeal number that does not exist, so kindly rectify the order. ठीक. तो एक क्वेश्चन आया है, ज्योत्सना मैडम पूछ रही हैं, कैन ए प्रोटेक्टिव असेसमेंट बी मेड विदाउट मेकिंग सब्सटेंसिव असेसमेंट? The case of person whose substantive assessment has to be made being reopened in section 147. नहीं सर, देखिए आप पहली बात तो लॉ में लिखा हुआ है कि सब्सटेंटिव के बिना प्रोटेक्टिव असेसमेंट नहीं हो सकता. दैट इज वेरी वेरी क्लियर. ठीक है सर. लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है, कुछ केसेस में ये हो सकता है
कि आपकी जो असेसमेंट है वो ये कहें कि ये आपके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द बेस्ट एग्जांपल वुड बी आपके ये जो संतोष मेडिकल कॉलेज किए हुए थे। सर संतोष मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था, बच्चे को एडमिशन किया और एडमिशन करने के बाद वहां पे जो है डोनेशन दी गई इन कैश। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बच्चे ने जो है 10 लाख रुपए डोनेशन इज एलिगेशन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस भी पेरेंट का पैन नंबर मिला उस पेरेंट का उठा के केस खोल दिया। अब मेरे एसएससी के केस में क्या हुआ, मैंने ये कहा कि मैंने कहा जी ठीक है जी, आप ये कह रहे हो ये डोनेशन दी, मैं ये कह रहा हूँ ये डोनेशन नहीं दी, और ये जो फीस भी जो पे की थी वो फादर ने नहीं करी थी, वो मदर ने करी थी, and father have not won a single rupee out of it, so no addition can be made in the hands of the father. So they said कि that mother का 148 होने का टाइम लिमिट है, तो they have done a 148 of the mother. तो जब उन्होंने मदर का वहां पे कर लिया और मेरे यहाँ पे सब जो है प्रोटेक्टिव असेसमेंट कर दी कि अगर मदर के हाथ में, अरे जब तक आप सब्सटेंटिव एडिशन नहीं करोगे तब तक प्रोटेक्टिव कैसे कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। So without a substantive addition, you cannot do a protective assessment, that is for sure. और हमने उसमें CIT अपील में गए, हमारी substantive तो हुई नहीं, क्योंकि वो पार्ट बाय लिमिटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, भूल गया, वो चेंज हो गया, जैसे भी है। और ये वाली प्रोटेक्टिव असेसमेंट जो हुई थी ये हमने डिलीट करा ली, तो बिना उसके नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन सर अनूप कुमार ग्रोवर जी हैं। राजेश जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। अच्छा ग्रोवर साहब अनम्यूट करके आप पूछिए क्वेश्चन। ग्रोवर साहब जी। हेलो जी मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग CIT अपील में सबमिशन कर चुके हैं लेकिन वो वहां से ऑर्डर पास नहीं हो रहा, तो हमें कब तक वेट करना चाहिए? सर देखिए, देयर इज नो टाइम लिमिट, सर देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन CIT अपील टू पास एन ऑर्डर। सो आपने अगर अपनी सबमिशन कर दी है तो इट इज ऑन CIT अपील टू पास द ऑर्डर, ही मे टेक हिज ओन टाइम, देयर इज नो टाइम लिमिटेशन ऑन हिम। सो आप ये नहीं कह सकते कि 30 दिन में नहीं आया या 6 महीने में नहीं आया तो ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, कोई टाइम लिमिट। ही मे आस्क यू फॉर रीसबमिशन, ही मे आस्क यू फॉर एडिशनल सबमिशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए कटपालिया साहब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। कटपालिया साहब। अविनाश जी, इन वन ऑफ द केस जो क्या नाम है 148 हुआ वो 30th मार्च 2021 में हो गया, आस्किंग टू सबमिट द रिटर्न। This is regarding school run by it's a charitable school run by in JJ कॉलोनी मतलब क्लस्टर में है। अब स्कूल बंद भी हो गया because of losses and all that। उसमें return was filed in response to notice on 8th March because वो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा था, whatever में भी अभी क्योंकि सारा डंप हो गया। 8 मार्च को रिटर्न फाइल हो गई, 8 March 2022। ओके, एंड एक्नॉलेज मतलब उस पे पोर्टल पे भी आ गया, बट दैट डे इट कुड नॉट बी ई-वेरीफाइड बिकॉज उस टाइम पोर्टल पे कुछ ग्लिचेस चल रही थी, 2-4 दिन नहीं हुआ, उसके बाद स्किप हो गया। एंड दिस रिटर्न वाज सेंट टू CPC बिकॉज 120 डेज का टाइम है, तो CPC को हमने भेज दिया। एंड दिस रिटर्न वाज e-verified on 22nd March as well with DSC. But on 21st March 2022, we received a letter from this department that since you have not e-verified the return, this is treated as defective return, and we will not consider the return, but we will consider the incomes shown by you. Okay. ठीक है। Then we filed and reply 142(1). All 142(1) notices, whatever has been asked, has been duly complied with. All details were P&L, balance sheet, and ITR में उन्होंने कहा जी नील रिटर्न है, 1,48,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट है, वो जो भी है। रीजन वाज कि डिपॉजिट ऑफ कैश, बिकॉज स्कूल के अंदर फीस जो है वो कैश में आती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, नाउ मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नाउ दे हैव पास द ऑर्डर विदाउट कंसीडरिंग माय P&L अकाउंट, पासिंग द ऑर्डर अंडर सेक्शन 144। ठीक है, एग्रीड।
whereas show cause notice was issued on 26th March to comply with draft assessment order. 27th March was the due date. That was a Sunday. कोई बात नहीं And सर, we have आपको देखो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिली. इट इज अ क्लियर कट. नहीं अपॉर्चुनिटी अब बीइंग हर्ड मिली. मैं उसी पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे उसी पे आ रहा हूँ. 26 को ही मैंने रिप्लाई कर दिया सिटिंग एट होम भैया कि 2 दिन भैया नहीं है, 27 को इस संडे सीए बंद है तो 29 तक डेफर कर दिया जाए. तो 29 को, और उसमें मैंने आई आस्क्ड फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. वर्चुअल हियरिंग मांगी आपने. वर्चुअल हियरिंग मांगी. दैट वाज गिवन टू मी ऑन 30th March. 29th March को I have submitted all the मतलब salary sheets etc whatever may be, all expenses details whatsoever I have uploaded everything. Now he has passed the order under section 144, which I think is bad in law, without issuing one, because my return, if it is defective, that has to be 15 days notice has to be given to remove my defect. That has not been given. 143(2), my return is being considered. That has been written in the order. It is being considered, but we will not consider the expenses. P&L has not been considered, but income is being considered. उसने 8% लगा के ऑर्डर पास कर दिया. कोई बात नहीं सर, हाई पिच असेसमेंट कमेटी को चले जाओ. है जी, हाई पिच असेसमेंट है सर, हाई पिच असेसमेंट कमेटी बनी हुई है, वहां पे आप लिख सकते हो. बट सर इसमें होगा कुछ भी नहीं. ओके. जब आपको 31 मार्च 21 को नोटिस आ गया था, तो आप 8 मार्च 22 तक सो रहे थे ये सब करते हुए. देखो सर ऐसा होता है, आपकी भी गलतियां हैं. अब आप सब कुछ असेसिंग ऑफिसर को 31 मार्च को या 30 मार्च को दे दोगे. बिल्कुल. आप इसको अपील में जाए. अपील में आप ये लिखे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड. पहली चीज. दूसरी चीज आप ये लिखे कि द रिप्लाई दैट यू हैव सबमिटेड देयर इज नो एडिशनल एविडेंस. आपने अच्छा हुआ सारी चीजें दे दी. दिस डज नॉट अमाउंट टू एडिशनल एविडेंस. सो यू से दैट यू हैव सबमिटेड दीज एविडेंसेस व्हिच हैव नॉट बीन ड्यूली कंसीडर्ड and not have been rejected also by the. He says ki salary register has been given but without PAN number. You have never asked me PAN number. तो फिर आप इसको सर उसमें ले जाएं कि you are submitting the additional evidences with which have not been asked for. So आप सैलरी रजिस्टर में पैन नंबर डाल के एडिशनल एविडेंस बना लो इसे. So उस केस में क्या है सर, देखो होना कुछ है नहीं इस केस में. इसमें जब सीआईटी अपील के पास जाओगे तो सीआईटी अपील क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा वेदर अपील इज इन टाइम फाइल्ड और नॉट. फिर आप क्या आएगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. उसने नहीं दी तो मैं दे देता हूँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. उसके बाद उसने आपसे बोला कि सैलरी रजिस्टर में पैन नंबर नहीं है, आपने एडिशनल एविडेंस ले लिया, वो अलाउ कर देगा उस एडिशनल एविडेंस को. रिमांड रिपोर्ट मंगाएगा या नहीं मंगाएगा दैट डिपेंड्स ऑन हिम कि भाई वो वेदर ही वांट टू डू इट. सिमिलरली अगर कोई और एक्सपेंसेस हैं या कुछ और चीज के आपने एविडेंसेस दिए हुए हैं, कोई और लगाए हैं आपने, अगर उसने उनके बारे में कुछ नहीं कहा अपने ऑर्डर में, तो सीआईटी अपील विल कंसीडर इट. अगर उसने कुछ कहा है तो वो दैट यू हैव टू मेक इट गुड. So in this is a fit case whereby you can also challenge that it is not a case of 144 itself. It should be a simple case of 147. So your legal ground is that when you have already submitted everything, you have appeared before the virtual hearing, you have submitted the reply for show cause notice, that show cause draft order also, you have submitted the return of income also, which he have also considered. इतना सब कुछ होने के बाद भी 144 करेगा क्या? भाई दैट इज व्हाट आई मीन टू से. मतलब मेरा सिर्फ ये 144 का ऑर्डर ही डिफेक्टिव है. मतलब 144 में ऑर्डर हो ही नहीं सकता. सर इन दिस केस आई थिंक द फर्स्ट लीगल ग्राउंड शुड बी that it should not be an order under section 144. It may be a normal order under 147. ठीक है सर. तो वो एक आपका ग्राउंड लीगल ग्राउंड हो सकता है. ITAT might give you a relief on this particular ground. अदरवाइज आप बाकी सारी चीजों को आप जो है मेरिट्स में वो लगा के कर सकते हो. यही है मतलब रिजेक्शन ऑफ बुक्स इज आल्सो नॉट देयर. तो 144 क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल. चलो सर थैंक यू. रीजन आगे थे आपने रीजन. थैंक यू सर. एक दो क्वेश्चन चैट बॉक्स में है. आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ. एक संजीव कपूर जी ने क्वेश्चन लिया, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर फॉर नोटिस रिसीव्ड ऑन 7/6/2021 अंडर सेक्शन 148 2021.
सर ये आपको सर असेसमेंट ईयर 14-15 के जो नोटिस हैं, आई थिंक ये सारे जो है 31 मार्च 22 इनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था और ये ऑलरेडी सब खत्म हो गए हैं, बट फिर भी आपका नोटिस एक बार देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन में आया है और 148A का प्रोसीजर जो है वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बेटर टू गो इन अ रिट पिटीशन एंड गेट इट क्वेश्ड। और जो आप कह रहे हो कि 2023 के लिमिटेशन दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, वो नहीं हो सकती। अशोक सिंगला जी पूछ रहे हैं हाउ टू गेट द कॉपी ऑफ रीजंस रिकॉर्डेड व्हेन देयर इज नो फैसिलिटी टू गेट ऑन पोर्टल आफ्टर। सर ये आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन फाइल करनी है और जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर आपको रीजंस टू बिलीव जो है आपके 148 के देगा और कोई जो है आपको नहीं देगा। यू हैव टू गो टू द जुरिडिक्शनल असेसमेंट ऑफिसर। रितिका जी लेट हो गई। सर आई रिसीव्ड ऑर्डर ऑन पेनल्टी। अच्छा, आई थिंक राम बंसल जी का हमने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। सर ये एक संजीव गोयल जी का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। संजीव गोयल जी कह रहे हैं वी हैव ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 डेटेड 21 September 20 against section 143(1) partially in our favor. What is the time limit for getting the effect of the order? Who will give the effect? Sir, jurisdictional AO will give the effect for this order, and that order has to be passed within 3 months from the end of the month in which it is received in the office of the CIT appeal order. Otherwise, the interest has to be given by the AO. Sir, वो पूरी provision है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके accordingly कर सकते हैं। चले सर, आई थिंक राजेश भाई हमने सारे क्वेश्चन जो हैं we have already taken all the questions there. थैंक यू अविनाश भाई। मैं अविनाश भाई के बारे में बता दूं कि इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7 whenever we call at odd hours also. He immediately pick the phone and answer all these things. He always ready to help members and student at large also. And I request, thanks once again, and request Ashwini Katpalia ji, please present a vote of thanks, sir. Katpalia ji, sir. Avinash ji इसके मतलब he has explained so much in detail. I think there must not be any question in the minds of the people, and I request all the participant members to go through his presentation, which has already been uploaded on the YouTube. I think राजेश जी आप हमारे YouTube पे डाल दिया ना? बिल्कुल सर। हाँ तो वो if you go through, I think most of the queries will be sorted out, most of the queries will be answered, and he has explained in such minutely and explained everything. Thank you very much for your wonderful deliberation, sir. And if any of the points, as rightly pointed out by, rightly said by Mr. Rajesh Agarwal, he is always available and he is totally always help to everybody. So I may call you, sir. That because no problem, sir. No problem. And I just make a small correction. This is not my presentation. This is a presentation for all of you, prepared by Dr. Ravi Gupta ji. And I just assisted Ravi Gupta ji for this presentation. The presentation belongs to Dr. Ravi Gupta only. Sir, ऐसा है, रवि जी तो गुरु हैं, ठीक है। वो तो मैं अभी आपके बाद उन्हीं के ऊपर बात करने लगा था, इन एब्सेंशिया उनका थैंक्स करने लगा था, because he is not there, because he is गुरु। मतलब जैसे गिरीश आहूजा जी हैं हमारे, मतलब हम उनको, because these are the साइक्लोपीडिया, बाइबल हैं ये हमारे, जो they help everything। तो कभी भी आप उनको कॉल करें, गिरीश आहूजा जी को जब मर्जी कॉल करिए, if he is not there he will call you back। So accordingly, मतलब these are the, मतलब हमारे प्रोफेशन के साइक्लोपीडिया। तो I thank Dr. Ravi Gupta in absentia, and I thanks for your